for investing various areas or hello in every discipline. The researchers use several approaches for investigating various areas or problems or issues of their discipline. For the study of politics, for the study of politics, political scientists have been using several different approaches. These can be broadly classified in two basic categories. Yesterday, I also discussed about this. There are two types of approaches. Number one, the traditional approach or normative approach or classical approach. Second one is the modern approach or empirical approach or contemporary approach. ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ନମ୍ବର ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ବା ଭ୍ୟାଲୁ ବେସ୍ଡ ପରମ୍ପରା ଧର୍ମୀ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଭ୍ୟାଲୁ ବେସ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସବୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 19 ଓ 20 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ କିଏ? ପ୍ଲାଟୁ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ହବ୍ସ, ମାକିଆଭେଲି, ବେନ୍ଥାମ, ଗ୍ରୁସିୟସ ହେଲା ଏଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିର ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ଧତିରେ କଣ ହେଲା ନା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ରହିଲେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ମାକିଆଭେଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ମତାମତ ଦେଲେ, ଡେଭିଡ ଇଷ୍ଟନ, ଆଲମଣ୍ଡ, ଏମାନେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନାଲିସିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଡାଟା ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନର୍ମେଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି। There are two main and competitive approaches to the study of political science, the normative approach or the empirical approach. The former has been popular traditional approach to the study of political science. It seeks to study political science by the use of knowledge of philosophy, history and law. It is a value-based theoretical approach to the study of political science. The empirical approach is the modern approach. It is also called the behavioral or scientific approach. It stands for the study of political science through the empirical study of all facts of politics. It involves data analysis and a scientific study of all the aspects of politics. आमे अप्रोचेस पढ़िबार कारण होउची जे प्रत्येक जिनिसर तार इवोल्यूशन बा ओरिजिन पाखरे पहुंचीबा। जदि आपण मानक मनरे क्वेश्चन आसे व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये प्रश्न समाधान करिया पई गोटिए मात्र बाट होउची सेटा हला जे जो अप्रोचेस को स्टडी करिबा हला। बिना अप्रोचेस रे आमे तार मूल दुआ पाई परिबा नाही। तेणु एथि सेति पई जो प्राचीन समय जो दार्शनिक माने मतामत देइथिले तांकू क्लासिकल बा ट्रेडिशनल बोली कहला, आधुनिक जुग तांकू आधुनिक मॉडर्न बोली तांकू कुआ गला। तेणु आमे वर्तमान मॉडर्न टाकू ग्रहण करिबा, कारण मॉडर्न विशेष करी अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर माने से माने यही जो मॉडर्न बेस रे एनालिसिस माध्यम रे ऑब्जर्वेशन माध्यम रे जो अप्रोचेस गुड़िक ग्रहण करिसंती ताहा वर्तमान ग्रहणीय अटे। बेसिकली एगुड़िक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार परे डेवलपमेंट होइथिला। हेलो
काली मु आलोचना करी जे पारंपरिक शैली भितर प्रथम था दार्शनिक शैली, ऐतिहासिक शैली आउ अनुष्ठान धर्मी शैली, वैधानिक शैली, रूपरेख शैली ये सब ऑलरेडी आम आलोचना काली कर सारी। आज आम मॉडर्न थ्योरी उपरकू जीवा। आधुनिक शैली बा मॉडर्न अप्रोचेस, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन पारंपरिक प्रवेश शैली विफलतारू आधुनिक प्रवेश शैली उत्पत्ति होईछि। कहीं विफल है ना सेते दार्शनिक माने तांको निजस्व मत देते। वर्तमान देख वैज्ञानिक जुगरे आमे डाटा सबकिछि कंप्यूटर माध्यम इंटरनेट माध्यम उपलब्ध पाई पारुछे। तेणु आमे जो नेचुरल ट्रुथ, नेचुरल जमी फिजिकल साइंस जमी नेचुरल ट्रुथ देता है से भाई पॉलिटिकल साइंस नेचुरल ट्रुथ देवाई चेष्टा करिछि। कारण पॉलिटिकल साइंस बोथ आर्ट एंड साइंस, राजनीति विज्ञान होची उभय कला और विज्ञान। जमिति विज्ञान आमको सत्यता दे थाए, राजनीति विज्ञान मध्य से बड़ी सत्य देवाई सर्वदा चेष्टा करि आसीछि। सेही कारणरू आमे ए आधुनिक पद्धति बा मॉडर्न अप्रोचेस को पढ़िबा को जाउचे। आधुनिक राजनीति विशारद माने मूल्यबोध भित्तिक अध्ययन परिवर्ते मूल्यबोध रहित मीन्स वैल्यू फ्री तथा परीक्षित और प्रमाण सिद्ध एम्पेरिकल अध्ययन उपरे अधिक गुरुत्व आरोप करिथांती। यही प्रवेश बा शैली रे केवल राजनैतिक अनुष्ठान नुहे, आभ्यंतरीण राजनैतिक प्रक्रिया और अनुष्ठान गुड़िक मध्य जड़ित रही थांती। आधुनिक प्रवेश मार्ग गुड़िक मुख्यतः वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध प्रकृतिर, सेथिपाई आधुनिक शैली और वैज्ञानिक शैली समर्थरे और व्यवहार दृष्टि ग्रहण करा जाई थाए। पारंपरिक शैली गुड़िक सेगुड़िक निजस्व सीमाबद्धतार चारित्रिक गुणावली गुड़िक सरकार और राजनीतिर तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्र में सफलतार सह प्रयोग होई पारि नथिला। यही शैली गुड़िक तुलनात्मक सरकार और राजनीतिर विश्लेषण समय मुख्यतः ऐतिहासिक, औपचारिक, आईनीगत, वर्णनागत, व्याख्यामूलिक शैली अटे। देख रामायण हो कि महाभारत हो, गीता हो, ये जो आमर पुस्तक आम जो पढ़ुचु तो एपिक्स गुड़ाक ताहा केते दूर सत्यासत्य अच्छी ताहा भी आम जानिनु, किंतु ताहा आदर्श बोध बा मूल्यबोध थिबा ताहाको आम अध्ययन करूछु। एगुड़ा सब ऐतिहासिक, औपचारिक और दार्शनिक मूलक व्याख्या ग्रहण करा जायछि। प्रकृत में महाभारत युद्ध होता कि कृष्ण थे कौन थे ता सत्यता न मिलते आम से पुस्तकर जो मूल्यबोध सेटा को आम ग्रहण करूँ। एगुड़िक संकीर्ण दृष्टिभंगी ग्रहण करती, अर्थात निजकू केवल पाश्चात्य राजनैतिक व्यवस्थार अध्ययन मध्य सीमाबद्धता करिथांती। औपचारिक आईन गुड़िक प्रकृतिर कारण सेमाने केवल आईनगत अनुष्ठान गुड़िकर विश्लेषणात्मक अध्ययन सह मात्राधिक संपृक्त अटंती। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीतिर अध्ययन क्षेत्र में प्रयोग हेउथिबा आधुनिक शैली गुड़िक पुरातन शैली गुड़िकर दोष त्रुटि को संशोधन करने को चेष्टा करिथाए। यह स्पष्ट कहा जाय पारिबो जे आधुनिक शैली सर्वदा आमको सत्य आड़कू जा वास्तव धर्मी वैज्ञानिक सम्मत विश्लेषणात्मक दृष्टि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन क्षेत्र में यह एक विप्लव सृष्टि करिछि। वर्तमान जो मॉडर्न अप्रोच केतेक कैरेक्टरिस्टिक्स कहूची जे आधुनिक शैलीर युक्तियुक्त तथ्य आधार रे सिद्धांत तैयारी करा जायताय। नंबर 2 एथिरे राजनैतिक संगठन और यार ऐतिहासिक विश्लेषण ठारू अधिक व्यापक अध्ययन करा जाई थाए। 3 नंबर आधुनिक शैली आंत विषयक अध्ययन विश्वास करि थाए। नंबर 4 यह राजनैतिक प्रसंगर वैज्ञानिक अनुसंधान करी
ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇ ସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ପରିକଳ୍ପିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7, ସମୟ ଓ ପରିବେଶ ହିଁ ହେଉଛି ପୁରାତନ ଓ ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମୟ ଓ ପରିବେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପୁରାତନ ଶୈଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ପଢ଼ିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ହେଲା Genesis and orientation of the system. Write down Genesis and orientation of the system approach. Next point. Okay. The genesis of the system approach can be treated to several different sciences. It has mentioned in this concerning the fields of biology, cybernetics, and operational research. This approach is also debated to anthropology, economics, and sociology. Louis von Butterfly and other philosophers are saying that the Society for General System Research and also a journal. They said that the goal of the system theory was the integration of the various science, natural, and social. Norbert Wiener believed that his concept of cybernetics control through the feedback could be a model for legitimate governmental of politics in a political system. Operations research applied the system approach to the use of radar installation during the Second World War. It was used to force the military outcome on the basis of strategy, tactics, and the design of weapons. Later, in times of peace, operations research becomes simultaneously with the system analysis in the natural and social sciences. Sociology also alludes to the way of the guiding human thinking in a systematic fashion. We often refer to the planning, programming, budgeting system. Means planning, programming, budgeting system used by the American government. David Easton Singer distinguished between the two differentiation, considering number one, system analysis and a general system. In this view, system analysis suffers from abstraction and lacks of a dynamic and a historical perspective. He opted for the phrase general systems, which should
which should study regularities in various systems. Game theory. Game theory has been used to political analysis of electrical strategies and external relations of political systems. Political systems have used to in the testing and implementing of the rational rational choice theory. This theory assumes that individuals tend to use actions that bring them the best result. Modern approaches, modern approaches that are sociological approaches, psychological approaches, economical approaches, statistical approaches, Marxism approaches, system theory approaches, structural functional approaches, cybernetics or communication approaches, behavioralism approaches, and post-behavioralism approaches. There are so many approaches will be studied in the genesis and orientation of the system. Now, I am going to next point. Next point, David Easton's system theory. David Easton's system theory. Please write down. Now I am going to the next topic, system theory of David Easton. System theory of David Easton. David Easton is an American scientist. David Easton is an American scientist. He developed the political theory in scientific. Easton's system approach, or is it popularly known as input-output model of the political system, has the distinction of being the first system approach developed by political scientists by using the political science. David Easton. David Easton was the first major political scientist to develop a systematic framework based on the system analysis for the study of a political phenomena. He has used the political system as the basic unit of analysis and constructed on the intra-system behavior of various systems as the principal areas of research and investigation. He praises Easton's system approach as the first approach developed and used by the political scientists for the study of politics. System theory ଅନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ କାରକମାନଙ୍କର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥାଏ। ଏହି ଶୈଳୀ ଜ୍ଞାତ ନିୟମିତ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁସଙ୍ଗତ ଢାଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକର ସାମିଲ ଯାହାକି ମୋଟ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣଶୀଳ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ଆନ୍ତଃପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକି ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ତାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜ୍ଞାପକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜସ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପସ୍ଥିତି। बी नंबर पूर्णांग व्यवस्था केतेक अंश को नहीं गठित। सी गोटे पूर्णांग व्यवस्था अन्यान्य पूर्णांग व्यवस्था ठारू केते भिन्न। नंबर डी गोटे पूर्णांग व्यवस्थार अन्य पूर्णांग व्यवस्था उपरे
प्रभाव और सेमानक द्वारा निजे प्रभावित देबा। नंबर ई पूर्णांग व्यवस्थार अंश गुड़िक केवल आंत संयुक्त नुहंती बरं सेमाने परस्पर और आंतक्रिया जारी रखि थांती। यही प्रक्रिया रे स्वयं कार्य करिवार पद्धति विकसित होता है। नंबर एफ अंश गुड़िकर सेमानक मध्यरे पद्धतिगत संपर्क प्रतिष्ठा करती, किंतु पूर्णांग व्यवस्थाटी सर्वदा निजर स्थिति जाहिर करि थाए। Easton's output input output approaches feature of the David Easton's system theory. Now I am going to explain the feature of David Easton theory. Please listen carefully. It is a systematical theory of David Easton. Input output process. You have already in computer science IPO process, input processing output. This model was adopted in the political science, input processing output. Okay, now I am going to say about the features of David Easton's system theory. Number one, a constructivist model. A constructivist model. Easton's input output model is a constructivist model. He conceives of the political system as a system of interaction and not as a membership system. Any set of interactions which seem interesting for research can be the focus of a study. The quote SP Burma quoting that Easton depend more on the analytic system approach rather than the membership systems approach. SP Burma said that Easton depends more on the analytic system approach rather than on the membership system approach. Easton's concept of a political life is that of a system of a behavior embedded in an environment to the influences of which the political system itself is exposed and it in turn reacts. This means that beyond the political system, there are other systems or environment, maybe physical, biological, social, psychological, etc., which distinguishes the political system from the other systems. आमर जेमिति अंग प्रत्यंग अछि, समस्त अंग प्रत्यंग मिलित होई गोटे शरीर गठन होउची एवं समस्त अंग प्रत्यंग कार्य द्वारा शरीर कार्यक्षम हेउची। जदि गोटे अंग कार्यक्षम न हुए ताले शरीर कार्य संपूर्ण समापन हुई न थाए बोली ईस्टन कहिसंती। नंबर 2, ईस्टन्स व्यू ऑन पॉलिटिकल सिस्टम. Easton conceptualized the political system, a set of interaction in any society through which binding or authoritative allocations are made and implemented. Easton कहिसंती कोन ना पॉलिटिकल सिस्टम रे राजनैतिक पद्धति रे हला राजनैतिक पद्धति रे जे राजनैतिक समीक्षा राजनैतिक व्यवस्थार समीक्षा करा जिबा उचित। जेंता हम प्रोसेसिंग रे पढ़िथिले इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। प्रोसेसिंग काम हला कोन प्रोसेस करिबा हला। जेमिति हम धान कल रे धानटा हला इनपुट, मेशिन टा हला प्रोसेस, चाउल हला आउटपुट। तेणु मेशिन रो काम हला प्रोसेसिंग करिबा। पॉलिटिकल सिस्टम रो काम हला से पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करिबा, डिबेट करिबा, क्रिटिसाइज करिबा और प्रोसेसिंग करिबा। नंबर 3, each political system is an both open and adaptive system. Each political system is an both open and adaptive system. Easton
concentrates of the study of the nature of exchange and transaction that occur between a political system and its environment. For him, the political system constantly receives from other systems a system of events and influences that shape the conditions under which its members act. Easton emphasizes the adaptive character of the political system. Again, S.P. Burma quoted to the David Easton and said, exposed as such in political system must have the capacity to respond to disturbance and thereby to adapt itself to the conditions under which it has to the function. In the political system, internal organization, there is no extraordinary capacity to adjust itself to the conditions under which it functions. That is saying by the S.P. Burma. Easton believes that political system accumulate large repertories of mechanism by which they try to cope with their environment and thereby regulate their own behavior, transform their internal structures, and even remodel their basic goals. ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଥିଓରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତଃ ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅଛି, ଆମ ଚାରିପଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ନିଜର ସ୍ଥିତିତ୍ୱ ଜାହିର କରିଛି। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷମତା ବୋଲି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ସମସ୍ତ ପରିବେଶ ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। କାହିଁକି? ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ସରକାର କଥା କହିବା, ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ, ତାହା ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବେଶ ଅଛି, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର, ଲୟର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଇନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମର ଯୋଉ କାମ ହେଲା, ପଲିଟିକ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ନିୟମ କାନୁନ କରିବା। ତେଣୁ ସେ ନିୟମ କାନୁନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋସେସ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଶେଷରେ ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ବାହାରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ପଏଣ୍ଟ, Easton's view of systematic persistence. Easton regards the concept of a system that is persistence as the chief characteristics of the political system. It refers to the ability of the political system to meet and come out of disturbances. According to the Easton, a political system may or may not come back to the original position after suffering disturbances and oscillations, but it persists so long as it is in a position to make and implement authoritative values in its environment. The concept of systematic persistence is opposed to the concept of equilibrium. Easton disapproved of the idea of equilibrium analysis as employed by sociologists because it neglected the dynamic capacity of the system
to cope with the environmental influences. पॉलिटिकल साइंस होची एक डायनामिक साइंस राजनीति विज्ञान एक गतिशील विज्ञान ता केबे स्थिर रही न थाए प्रत्येक समय अनुजाई राजनीतिर नीति नियम गुड़िक बदली थाए तेणु ए स्थिर आईन कानून सपक्ष रे डेविड ईस्टन मत देना सर्वदा परिवर्तनशील कथा को से कहते According to David Easton, the equilibrium analysis has two major shortcomings. First, it attaches for too great importance to equilibrium, which is considered as indistinguishable from stability and treats it as for any goal of the members of the system trying to cope with change or disturbance. Secondly, equilibrium is in this method of analysis does not attach importance to the presence or the problems formulated by the process. The system may have more other goal than that of reaching one or any other point of equilibrium. Number 3, interactions between the environment and the political system. It is a very important point. Interactions between the environment and the political system. जोटा ऑलरेडी कहिसलेनी हमर पॉलिटिकल सिस्टम समस्त परिवेश को नेकी किपरि कार्य करूची. According to the David Easton, a political scientist must concrete a political scientist. अच्छा कहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट गोटे प्रश्न पचारुची को मान को पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आजिबो आ को मान को पॉलिटिकल लीडर को आजिबो के कहबो कहलो हु आर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट हु आर द पॉलिटिकल लीडर्स एग्जांपल उठलो कहा को हमें पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोली कहि परिबा आ कहा को पॉलिटिकल लीडर बोली कहिबा पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहले आमे सेही मानु को बुझाई थाउ जे माने निजर फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी रे फिलोसॉफी प्रदान करिथांती राजनीति तत्व उपस्थापन करिथांती से मानु को पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोली कहि एग्जांपल अरिस्टोटल प्लेटो माकियावेली दे आर द पॉलिटिकल साइंटिस्ट. But a political leader means who leads the politics. Who leads the politics, they are called the political leader. Example, Narendra Modi, Donald Trump, they are the political leaders. Okay, Easton, according to the Easton, a political scientist must concentrate on the processing and the converting of a variety of influences which flew from the environment into the political system and on the way in which system respond to these influences. What Easton calls the life process of the political system, those fundamental functions without which no system could endure, together with the typical nodes of responses through which systems manage to the system in themselves. सिस्टम थ्योरी मूल प्राकृतिक संविधान निहित अछि जदियो एथिपाई असंख्य विप्लव विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण को संयोजित करबा निमंते कार्य करिसंती. एई सिस्टम थ्योरी संबंधित मौलिक चिंताधारा जीव विज्ञान बायोलॉजी उद्धृत होईची और परवर्ती समय सामाजिक विज्ञानी माने सोशल साइंटिस्ट यह को ग्रहण करिसंती. जर्मन बायोलॉजिस्ट लुडविग भान बटरफ्लाई 1930 दशक साधारण व्यवस्था तत्व को सर्वप्रथमे प्रचार करथिले
यही साधारण व्यवस्था तत्व को समाज विज्ञानी माने व्यवस्था तत्व को उद्धृत करते बटलानफ्लाय व्यवस्थार संज्ञा निरूपण करी कहते जे यह हूँ एक अंतक्रिया इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन एक सिस्टम यही व्यवस्था तत्व को स्पष्ट भाव कहुए जे यह केतेक अनिश्चित बा अस्तित्वधारी उपादान एक समष्टि यही उपादान मानक मध्यरे एक अंत संपर्क रही थाए यह फल से संपर्क भितरे अन्य उपादान मानकर व्यवहार सह संपर्क किंबा व्यवस्थार इतिहास संबंधी तथ्य आहरण करिथाए सिस्टम थ्योरी अन्य माने ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ डेविड ईस्टन 1965 मसीह गोटे पुस्तक लिखिथिले ता थिला ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ जहाँ तांकर सिस्टम थ्योरी उपरे पर्यवेसित सेही भलिया गैब्रिएल आलमंड मध्य सी एक पुस्तक लिखिथिले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच 1978 एटा को गैब्रिएल मध्य लिखिते जोथे कि सिस्टम थ्योरी कथा लिखा जायछि नेक्स्ट डेविड एप्टर का पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल एनालिसिस 1978 रे डेविड एप्टर मत से सिस्टम थ्योरी कथा वर्णना कर कार्ल ड्यूच पुस्तक सिस्टम एंड वर्ल्ड कंटेम्पररी पॉलिटिकल साइंस 1967 रे मध्य ए सिस्टम थ्योरी कथा से लिखिछन मोर्टन कापलान का पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1957 से मध्य सिस्टम थ्योरी कथा प्रकाश करिसंती तेणु एही भलिया अनेक दार्शनिक सिस्टम थ्योरी कथा उपस्थापन करी सिस्टम थ्योरी व्यवस्था विषय से माने सब लिखिसंती Now analysis of the Easton's input-output model. I am already sending the Easton's input-output model, the black box model, in your WhatsApp group. Maybe check it. The model of Easton's system theory of David Easton already sending in your WhatsApp group. Maybe check it. David Easton's system approach involves input-output analysis. The political system is analyzed in terms of what it does in the environment. According to him, political system is basically a system making and implementing authoritative values by the process of conversation of input and outputs. Basically, a system making and implementing authoritative values by the process of conversation of input and outputs. The inputs flow from the environment into the political system for conversation into output. Inputs and outputs are the functions of a political system, which is a system of conversation of inputs into outputs. The political system is a set of interactions involving the conversation of inputs into outputs. Inputs flow from the environment into the political system for conversation into output. That is, authoritative and binding values, decisions, rewards, punishment, and policies. Outputs have a feedback which leads to more inputs resulting from the feedback infrastructure. डेविड ईस्टन तांकर इनपुट आउटपुट मॉडल को सी गोटे ब्लैक बॉक्स मॉडल माध्यम रे कलाछांच माध्यम रे से प्रकाश करिसंती हला मो जो पठेछि देखंतु एथिरे व्हाट्सएप रे गोटे पट अछि इनपुट
मझिरे अच्छी प्रोसेसिंग शेषर अच्छी आउटपुट आईपीओ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट है ता चारिपटर अच्छी विभिन्न प्रकार एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट कल्चरल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिलीजियस एनवायरनमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा अच्छा हम इनपुट से कौन दबा बर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम कथा कहूँ इनपुट रे आम कौन दबा आम गोटे आईन या जाऊे पॉलिटिकल सिस्टम रे गोटे आईन या आईन या आईन गोटे प्रोसेसिंग आईन या जो डाटा डाटा दरकार से आम इनपुट बोली कहले इनपुट को दी भाग करदे गोटे है डिमांड आउ गोटे है सपोर्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनपुट गोटे है डिमांड आउ गोटे है सपोर्ट डिमांड रो कौन है ना किछि आम परिवेश रे किछि लोक चाहूचंती जे एमिति प्रकार आईनटी तैयारी करा जाय डिमांड जेमिति वाकअप बिल कथा मु कहूँ प्रेजेंटली गोटे वाकअप बिल पास इन द पार्लियामेंट किछि मेंबर्स माने कहिले जे वाकअप बिल भारतीय मान पई ठीक अछि एटा को पास करा जाय हैला किछि लोक कोन कले याकू सपोर्ट कले वाकअप बिल सपक्ष रे वोट देले आ किछि लोक वाकअप बिल विरुद्ध रे वोट देले तेनु ये जो इनपुट रे डिमांड आ सपोर्ट को नेकी आमे प्रोसेसिंग रे प्रवेश कराइले प्रोसेसिंग रे कोन हला ना प्रोसेसिंग रे पार्लियामेंट रे आप रे बहुत आलोचना पर्यालोचना चलीला 120 घंटा ए विषय आलोचना हला जेटी ता प्रोसेसिंग प्रथम रे कोइ जे पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस तुनो पार्लियामेंट हो तार सबुटो बड़ लैबोरेटरी एंती साइंस रे लैबोरेटरी थाए पॉलिटिकल साइंस रे मध्ये लैबोरेटरी अछि सेटा हला पार्लियामेंट पा लेजिस्लेटिव असेंबली ए सब होइछ तो पाखा पाखी 120 घंटा ये वाकअप बिल ऊपर आलोचना चलला परे शेषरे निष्पत्ति निया गला से निष्पत्ति होची आउटपुट कोन हला आउटपुट आउटपुट रे दिटा जिंस वाला गोटे डिसीजन आ गोटे पॉलिसी डिसीजन जो मेंबर माने गृह रे जो डिसीजन नेले ताहाकू वोट देई पॉलिसी रे तैयारी कले पॉलिसी मींस लॉ बा एक्ट ताकू परिणत हला फाइनली वाकअप बिल टा लॉ रे परिणत हे गला इनपुट रे हला लोकंर डिमांड सपोर्ट प्रोसेसिंग रे हला जे मेंबर माने निजर मतामत रखिले तर्क आलोचना कले आ आउटपुट रे जो डिसीजन निया गला एटा पॉलिसी आकार रे बाहला तो एई वाकअप बिल टा जत्ते बेले आमे सारा भारत रे कार्यकारी करबा ताहा प्रकृत रे भारतीय मानक पई उपयोगी अटे ना उपयोगी नुहे तार तो गोटे फीडबैक नबा किछि लोग कहले हाँ मुसलमान पई एटा भलो अछि आउ किछि मुसलमान कहउछन ना एटा मुसलमान विरोधी आईन कोउटा ठीक हम जानिबा केमिति तुन ए आईन टा को एनवायरनमेंट ऊपर प्रयोग करबा सब लोग या को ग्रहण करबे तापर आमे किछि दिन पर यार फीडबैक नबा ए आईन टा केते दूर सक्सेसफुल हेछि फीडबैक मींस आईन को तर्जमा कर आईन टा जो प्रणयन करा गला तो कार्यकारी करा गला तार फीडबैक नबा जदि भारतीय माने ए आईन को ग्रहण करूचंती बा परिवेश रे या उपयुक्त अटे ताले यह आईन चिरस्थायी रहिला जदि ए आईन टा उपयुक्त नुहे लोक माने यह बिल ए आईन विपक्ष रहउचंती ताले पुनी कोन करा जिवो पुनी इनपुट को आसीबो ये बिल टा को पुनी इनपुट माध्यम रे प्रोसेसिंग पठा जिवो प्रोसेसिंग ताकू पुनी डिस्कशन करिवो डिस्कशन करिकि ताकू अमेंडमेंट करिवो पुनी एक नुआ बिल पास करिवो हला ये हला डेविड ईस्टन कर जो ब्लैक बॉक्स मॉडल तो से कंप्यूटर माध्यम रे या को से समाधान करतले तो प्रथम रे कोहा कहिछि मु जे आधुनिक पद्धति गुडी को वैज्ञानिक सम्मत आउ इन्फॉर्मेटिक्स साइबरनेटिक सम्मत तो आमे बाहर को न जाई कंप्यूटर माध्यम रे साइबरनेटिक्स माध्यम रे सब समाधान करबा देखो आगुरु रिसर्च करिया पई आमे सब फील्ड जाउतले आम समय आमे रिसर्च करिया पई पीएचडी करिया पई आमे फील्ड जाउतले फील्ड रे डाटा कलेक्शन करूतले निज आखिरे देखुतले सब करूतले वर्तमान आपण माने जो रिसर्च करिबा करूचंती आ फील्ड जिवा पडुनी काई जिवा पडुनी ना ऑल डाटा आर अवेलेबल इन कंप्यूटर्स गूगल होची भगवान
आज दुनिया गूगल हूँ भगवान भगवान डाकिले से लेट आसुँच कि गूगल जल्दी आस गूगल को आम जहाँ मागुचे आमको सागे सागे दे दूचे तेणु आमको रिसर्च करिबारे अति सहज होउची जो डाटा आम जानी ना जो डाटा पाई ना ताहाको पाइबार मध्य सहज हो जाउची तेणु यही सिस्टम टाकू डेविड ईस्टन पॉलिटिकल साइंस रे व्यवहार करथिले आम आहुरी अधिक एनालिसिस करबा जो मैं कहली जे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग फीडबैक एटा कोन म आउटे डिटेल्स कहूची environment of the political system by the environment of the political system those social environment biological environment sociological environment political environment economic environment and personality forces environment both inside and outside a particular society the affects and are affected by the political system but are analytically distinct from it. It is conceptualized in two parts: input environment and output environment. What is input environment? The input environment from which the political interactions begin. What is output environment? Now that is the environment in which the output of the political system are implemented. Further, David Easton makes a distinction between the intra-societal environment and the extra-societal environment. Intra-societal environment and extra-societal environment. What is intra-societal environment? Now, it consists of other subsystems of the social system which are engaged in influencing the flow of input into the political system. It includes economic, culture, social, structure, personalities, elites, political parties, pressure groups, associations, etc. These shape and influence the environment in which the political system operates. आभ्यंतर आंतरिक भितर किए किए रहिले को मानकर जो प्रेशर रोची आईन तैयार करने ପାଇଁ क्यों माने प्रेशर करती गोटे इकोनॉमिक परिवेशर सांस्कृतिक परिवेशर सामाजिक परिवेशर व्यक्तिगत परिवेश जे एलआईटीज मीन्स आमर जो सर्वोत्कृष्ट गोष्ठी जो शिक्षित गोष्ठी शिक्षित जो मैंने राजनीति अंशग्रहण करते शिक्षित गोष्ठी माने बड़ 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 चाकरिया बुद्धिमान पॉलिटिक्स रे सीधा अंशग्रहण करती ना परोक्ष भाव में मतामत करती परोक्ष भाव में राजनीति ग्रहण करती से मानू एलआईटी सर्व उत्कृष्ट गोष्ठी बोली कह जाए से प्रेसर पकई था पॉलिटिकल पार्टी ये तो अधिक गुरुत्व दे था प्रेसर ग्रुप माने चाप गोष्ठी से चाप पकई था यह व्यतीत विभिन्न एसोसिएशन अच्छी सपोज मुझे कहबी फार्मर एसोसिएशन इंडिया बड़ एसोसिएशन ऑल ओवर इंडिया आर ब्रांचेस अच्छी सी डिमांड करिवो कि सपोर्ट करिवो जे एई फार्मर सपक्ष रे बिल टे पास करा जाऊ बिल पास करिया पई एमाने डिमांड करथांती केमिति धानर मूल्य 31 टଙ୍କା को वृद्धि पाइला फार्मर एसोसिएशन डिमांड अनुसार धानर मूल्य को वृद्धि हला सरकार ताकू ग्रहण कले वो आईन परिणत कले वो कार्यकारी हला ता सीधा उदाहरण डेविड ईस्टन जो प्रोसेस कथा कहिथिले या सीधा उदाहरण तेणु या पूरा पूरी कार्य करुची नंबर 2 कथा कहबी द एक्स्ट्रा सोशिएटल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स ऑल दोज सिस्टम्स व्हिच आर एट वर्क आउटसाइड द एनवायरनमेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऑल अदर स्टेट्स particularly the neighboring states supranational actors like the
United Nations of organization, and other international agencies constitute the extra societal environment, international economic system, world public opinion, international court of justice, and the international law all influence the working of the political system. ମୁଁ ସିଧା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚଳଣି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମାନେ ଯେତିକି ମତାମତ ଦଉଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାପ ପକାନ୍ତି, ଯେମିତି ମାମୁଁ, ମଉସା, ପଡୋଶୀ ଦାଦା, ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର, ଏହା ନ କର, ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠ ପଢାଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସୋସିଏଟାଲ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଯୋଉ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, WTO, UNO, ୱାର୍ଲଡ ପବ୍ଲିକ ଓପିନିଅନ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ, ये सब गुड़ाक देश उपरे प्रभाव पकांती बा पॉलिटिकल सिस्टम उपरे प्रभाव पकांती। तेणु बाह्य परिवेश उपरे जड़ित रही है। तेणु आज सीधा एग्जांपल मध्य दउची, अमेरिका रे जो तारिफ रेट कहा को बढ़ेला, कहा को कमेला। सपोज भारत कथा कहबा, ट्रम्प भारत उपरे 26% तारिफ लगाई देले, जहा द्वारा कि भारतर इकोनॉमिक सिस्टम टोटाल बिगड़ी कला, भारत रो इकोनॉमिक पूरा दुर्बल हवा को लागिला। तो सही भलिया बाहर परिवेश आम उपरे किछि चाप पकाई थाए, तो ताकू मत ध्यान देबा को पड़िबो। जदि हम ताकू न सुनिबा ताले कार्य करि परिबा ना। नेक्स्ट, इनपुट और इनपुट functions of the political system. What is input? Input are activities which enter the political system for getting converted into authoritative values. These flow from the environment into the political system. Those events in the environment that act upon the political system and evoke some kind of a response from it. Easton refers to kind of inputs. One, demand. Second, support. Demand. A demand can be described. A demand can be described as an articulated claim of the groups which arises from the environment and enters the political system for conversation into the output. Demands are of the nature of raw materials which are fed into every machine for securing the products. In the concept of a political system, these are expressions of a desire that values be allocated in particular ways of areas or directions. These are of the nature of articulated and aggregated claims into rights from the environment and are fed into the system for conversation into authoritative values. David Easton observes, a demand is an expression. A demand is an expression of opinion that an authoritative allocation with regard to a particular subject matter should or should not be made by those responsible for doing so. The demands are regulation of behavior, allocation of goods and services, participation in the political system, and
communication and information. The demands stand classified into these four parts. A political system has to meet these demands. Next point, support. Support can be described as the faith and the support for and participation of the people in the political system. Supports refer to the energy which flows from the environment into the political system and helps it to process and convert the demand into outputs. It is the degree of willingness which characterizes people's participation in the political system. These are expressions of willingness to accept particular values, allocation, or the process by which the allocation are made. Supports are four types. There are four types of supports. One, material support such as payment of taxes. B, obedience support such as obedience to the law, rules, and regulations. 3, participatory support such as voting in election and participation in political activities. 4, respect for public authority, symbols, and ceremonies as well as governmental communications. Support stress. Lack of a support creates a support stress. Lack of a support creates support stress. Lack of a support limits the ability of the political system to convert inputs into outputs. Each political system tries to minimize support. These try to minimize support stress. A political system must reduce or eliminate the support stress. Otherwise, its persistive ability can be endangered. This can be done through curative outputs, proper political socialization, even distribution of gains, etc. Next, levels of support. Levels of support. Easton also refers to the three main levels or sub-objects of a support. Three main levels or object of a support. First one, support for a community, meaning fellow citizens. B, support for regime, meaning values of the system. And C, support for authorities, meaning power holders. A system is very stable if there is adequate support for all the three levels. It is quite stable in three is adequate support even for the first two levels. It tends to the most unstable if there is lack of support, particularly for the first level. The bigger the support, the greater the stability of the political system. Demand and support are two inputs of the political system. David Easton says, demand are the new material out of which finished products called decisions are manufactured, and supports the energy is the form of actions or orientation
promoting and assisting a political system. The demands arising in it and the decision emanating from it. Demanding arising in it, decision emanating from it. Next, I am going to the next point, process. Process. Conversation process of a political system. It is constituted by the institution, process and interactions by which the political system converts inputs, means demand and support, into outputs. In Easton's model, it is shown in the black box model given to your WhatsApp. Output functions of the political system. Output flew out the political system in the form of binding and authoritative decisions, laws and policies. Output result from the conversation of input. These are of the nature of authoritative values produced and implemented by the political system. Why it is authoritative values? Because it is already passed as a bill, passed as a law or act, so it is authoritative. Political system that affect the system's environment in some manner, consisting main of the authoritative decisions and acts, rules, laws, act, rule, laws. I know three part. Act, rules, laws, policies, decisions, rewards, deprivations, plans, policies, and the like. They are the output. ଆମେ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ କଣ କଣ ପାଇବା ନା ଆକ୍ଟ, ରୁଲ, ଲଜ, policies, decisions, rewards, deprivations, plans, policies, etc., etc. They are the output. Output can be classified into three parts. Remember it. Outputs classified into three parts. First one, output emerging as primary products resulting from the conversation of inputs. Secondly, associated outputs which indirectly flew as extra parts of outputs. Thirdly, outcome, that is the net effect. Hello, sir. Again, yes. Yes, sir. There are three parts of, there are three classified of outputs. First one, output emerging a primary products resulting from the conversation inputs. प्रथमटा हला जे आउटपुट बाहरला जो आमे पार्लियामेंट रे जो डिस्कशन हला जो आईनटा बाहरिला ना प्राइमरी स्टेज रे आमे जानचे फाइनली एते राष्ट्रपति साइन मारिबे हेटा लॉ रे परिणत हबो जे पर्यंत राष्ट्रपति साइन मारी नाहांती इट इज नॉट ए लॉ हला तेनु हेटा प्राइमरी स्टेप outputs emerging the primary product resulting from the conversation of input. Secondly, associated outputs which indirectly follow as extra part of outputs. Thirdly, outcomes, that it is the net effect produced by the inputs or those changes in the environment but about by the political system output. फाइनली जो आईनटा बाहरी गला हला से आईनटा को जतले आमे तयारी फाइनली हेई गला ताको मानिबा को समस्त बाध्य होबे काई बाध्य होबे समस्त ना एटा ऑलरेडी पार्लियामेंट रे पास हेई जाईछि तो ताको केही आउ अटके पारिबे नाही से सेरा को मानिबा को पड़िबो बुझेला टी ना आतो केबी हो आमे जो नेक्स्ट फीडबैक माने कोन आमे जहा किछि कहिले तारो जो फीडबैक नबा अर्थात ता केते दूर ग्रहणीय केते दूर ग्रहणीय नुए मतामतटा को नबा
एटा हला फीडबैक। ओके, ईस्टर्न कौन फीडबैक कहते? ईस्टर्न्स इनपुट आउटपुट मॉडल रे फीडबैक प्रोसेस इज ए फीडबैक प्रोसेस इज ए वेरी इंपोर्टेंट। खाली आईन टाको प्रणयन करदेले हबन, ताको लोक माने ग्रहण करूचंती कि नाही ता जानिया पड़िबो। मु खाली पाठ पढ़े देले हबो नाही, तुम आगे गाई देले हबो नाही। मु मोर पाठटा पिला माने केते जोर बुझी पारुचंती ता ही बड़ सबुठ इंपोर्टेंट। पढ़ेबा इंपोर्टेंट नुहे, पिला को बुझे परिबा, पिला ताको मने रखिबा सेटाला इंपोर्टेंट। तेबे जाके तार वैल्यू हबो। ठीक सेही बळी आईनटा खाली प्रणयन करदेले हबो नाही जे राष्ट्र चलिबो। आईनटा राष्ट्र केते दूर कार्यकारी हला ताहाको जानिबा दरकार। दैट इज द फीडबैक। द कांसेप्ट ऑफ द फीडबैक is the central part of David Easton's input output model of a political system. It is the process by which reactions to the output of the system travels back to the levels of inputs and give rise to activity demanding necessary outputs. It is a process of communication between outputs and inputs. It is a dynamic process through which information about the impact of implementation of output and the performance of the system travels back to the system and affect the subsequent behavior of the system. फीडबैक रा काम हला कोन? पछुआ जिबा, लोक मानक थारु मतामत ग्रहण करिबा ओ मतामत को ग्रहण करिकी आमे तार पुणी समीक्षा करिबा। जदि ठीक अछि तेबे ता प्रयोग हला, जदि ठीक नाही पुणी आमे इनपुट रे प्रवेश करेबा, प्रोसेसिंग करिकी पुणी आउ थरे ताकू बाहर करिबा। हला एटा हो तारो उटे पार्ट। आउ डेविड ईस्टर्न कथा के बुझर अछि कि नागु जिबी? डेविड ईस्टर्न थिरु के पचार अछि क्वेश्चन पचार नागु जिबी? ओके, क्रिटिसिज्म ऑफ ईस्टर्न थ्योरी। ईस्टर्न जो कथा कहिले ताहा केते दूर ग्रहण बा ग्रहण नुहे आमे ता क्रिटिसिज्म रे पढिबा। जेरा म कहतली क्रिटिसिज्म ऑफ मेथोडोलॉजी हला, क्रिटिसिज्म ऑफ मेथोडोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट हला ये बोरूड मॉडल, ये बोरूड मॉडल से उदाहरण दिले। फर्स्ट सेवरल क्रिटिक्स advocate that the Estonian system theory has for its basis classical thoughts, especially that of Adam Smith. Adam Smith ना सुनी तो? Adam Smith जने इकोनॉमिस्ट, तांकुट से बोरो करथिले। especially that of Adam Smith. I.S. Suzarnu has attempted to prove that whatever questions and hypotheses Estonian system approach appears to generate are mere derivations from the classical economic theory, and in a less perfect and even confusing way that Smith himself did. Suzarnu observes that the Easton's model and the traditional economic approach share not only the notions of a system and input-output, but those of scarcity, allocation, competition, maximization, goal-seeking, and feedback as well as. डेविड ईस्टर्न ए सिस्टम थ्योरी को निजे तैयारी न करी
से अन्य मान ठारू एटा ग्रहण करथिले बेसिकली या आडम स्मिथ को जो इकोनॉमी क्षेत्र व्यवहार करथिला से ताकू पॉलिटिक्स रे व्यवहार करथिले नंबर 2 पॉइंट नारू व्यू ऑफ सिस्टम नारू व्यू ऑफ सिस्टम Easton's concept of a political system identified through its authoritative allocation is a narrow concept. Surjano regards it is a limited hypothesis. Daniel Moe is of the view that by the conceptualizing a political system simply from the point of view of what it does, Easton seems to have rendered this concept of political system less useful. Easton ଦେଇଥିବା ମତାମତ ତାହା ସର୍ବଦା ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଏହା କମ ବ୍ୟବହାର ଏଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ ଯେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ୟୁଜ କରିଦେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଦେଶରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ମୋନାର୍କି ମୋନାର୍କି ହେଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଇନା ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅଟୋକ୍ରାସି ଡେମୋକ୍ରାସି ସେଠି କଣ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବ ଚାଲିବନି ତେଣୁ ଡେଭିଡ ଇଷ୍ଟନ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ନମ୍ବର 3 does not cover para system Easton's model efforts no systematic way of the analyzing parapolitical system and in international system number 4 gives no reason for the authorities of a political system. Easton fails to answer such questions. What makes the system authoritatively allocate the values? What makes the system authoritatively allocate the values? Why does it convert inputs into output? से कहीं की इनपुट को आउटपुट कन्वर्ट कले से कहीं की अथॉरिटेटिव वैल्यू बाहर कले हला थॉमसन L. Thompson has criticized Easton for the dogging answer of these questions. तेणु यही कथा उपरे L. Thompson समालोचना करिसेंती. Number 5 ambiguous in content. Claude Ack holds the Easton's system theory is ambiguous in several ways. He writes the relation between the variables are not stated with rigor. It is difficult, if not impossible, to apply it to be the study of the world, and the data gathered in the context of a theory will mean little in anything. Number 6 concept of a systemic resistance is faulty. Easton's concept of a systematic resistance and change have also been criticized by critics of grounds of precision. As Evans puts, Easton talks of persistence of the chief property of the political system. Number 7 projects the system as the automatic system. Another serious weakness of Easton's system approach is that it is hinged on the system automatic response to stress. Reading Easton's one gets the impressions, as Daniel Moe writes, that he just does not consider the distinction between the goals of the individual or groups and those of the system. Number 8 fails to specify the role of individuals in political system. Easton's model gives little place to the study of individuals or their groups. As I.M. McKinsey holds that Easton has pushed
Eastern has focused on political as a matter of process and events rather than of individual of groups actions. The Estonian model relegates the individual to the background. Group struggle has failed to attract Eastern's interests. Point 9. Observation with systematic persistence. Objection with systematic persistence. Easton is almost to observe with systematic persistence. He ignores the issue of political changes and revolutions. He is dominated by an equilibrium orientation. Point number 10, fails to elaborate conversation process. Finally, Easton's input-output model ignores the importance of the study of a conversation process. ତେଣୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଡେଭିଡ୍ ଇଷ୍ଟନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଥିଓରିକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କରିଛନ୍ତି. Now, David Easton's system theory chapter is completed. Okay. Now I am going to the next lesson, structural functional approach. Structural functional approach. Okay. Now I am going to the second theory, structural functional approach বা সংগঠনাত্মক কার্যাত্মক শৈলী. It is present by Gabriel Almond. Structural functional approaches is a part of a system theory. Structural functional approach has been a part popular and useful approach to the study of comparative politics. Functional approach. It has been a very popular and useful approach to the study of politics and political system. It seeks to study political system as a set of functions performed by several structures which together constitute the system of politics. It seeks to identify and analyze the structures which constitute the political system and perform several functions both internally and vice versa other societies. The structural functional approach seeks to analyze what basic functions are performed by what political structures. Charles Worth explains the crux of this approach in a very simple way. He writes, the structural part of the approach refers to any human organization that do things and have an effect on human beings and other human organizations like a family, a public corporation, a court, a bureau, or a legislative body. The functions part relates to the activity of the agency and its external effects. These, according to some, are divided into latent and manifest, meaning that the latter are international and the inter-incidental or accidental. संगठनात्मक और कार्यात्मक शैली यह एक विश्लेषण व्यवस्था विश्लेषण अन्य एक उत्पत्ति समाज शास्त्र आसीथिबा
ତଥା ମାଲିନୋସ୍କି ଓ ରେଡକ୍ଲିଫେ ବ୍ରାଉନଙ୍କ ଭଳି ନୃଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ ମାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗାବ୍ରିଏଲ ଆଲମଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶେଷ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ରୂପେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶୈଳୀରେ ମୌଳିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ ବିଚାର ଏହା ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ୟଙ୍ଗଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୈଳୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୌଣସି ସମାଜରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଢାଞ୍ଚା କେଉଁ ମୌଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶର ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ଶୈଳୀ ଗୁଡିକ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ସମାଜ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଯାହାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। 2ରେ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜ ଅନେକ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। 3ରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହାର ରକ୍ଷା ଏହା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥାଏ। 4ଥରେ ଆନ୍ତଃଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନ କରିବାରେ କ୍ଷମତା ସମାଜର ଅଛି ବୋଲି ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। 5ମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସହ ସଂଗଠନ ବି ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ସଂଗଠନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ଏହା ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ ଯେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନେକ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପାଦକ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ଲାଟେସନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବୁଝାଯାଏ। ଏକ ସଂଗଠନ କେତେକ ସମ୍ପର୍କିତ ଭୂମିକା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହାକି ମୂର୍ତ୍ତି ସାଂଗଠିକ ସଂରଚନା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର 3ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟ ଜାଣିଛେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏଜୁକେଟିଭ ଏଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରୀ। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ଏଜୁକେଟିଭ, ଜୁଡିସିଆରୀ ये सब राजनैतिक ऑर्गन। लेजिस्लेटिव काम है टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव काम है टू इम्प्लीमेंट द लॉ, जुडिशियल काम है टू एडजुडिकेट द लॉ। तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक ये संस्था गुड़िक निज निजर पॉलिटिकल कार्य संपादन करिथांती। मु व्हाट्सएप ग्रुप रे पठे देली देख जो डेविड इस्टरंकर सॉरी गैब्रिएल आलमंडकर थ्योरी को मु पठे दोची देखि दियो टिके। तांकर मॉडल टा कोन अछि देखि दियो ता मॉडल टा पठे देली से कोन लिखि जन मॉडल रे। ओके मु तांका मॉडल को वर्तमान मु एनालिसिस करूची से कोन कोन मॉडल सब करछन। गोटे अछि कार्य निवेश कार्य आगमन कार्य द्वितीय निर्गमन कार्य। आलमंड्स assumptions एंड ऑब्जेक्टिव। आलमंड्स assumptions एंड ऑब्जेक्टिव तांकर ऑब्जेक्टिव कोन अछि फर्स्ट रे टू आइडेंटिफाई द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड in all political system irrespective of the levels of development. B.
to see how these functions are performed in different political systems. Almond's analysis of common characteristics of all political systems. All political systems have similar structures and functions which can be basis of studying and comparing their working. Almond refers to four main characteristics. Almond refers four main characteristics. These are: number one, all political systems have political structure, that is legitimate pattern of a human interaction by which order is mentioned. Number two, the same general functions are performed in all political systems, two with different frequencies and by different kinds of structures and in different styles. Number three, all political structures, no matter how specialized, are functional, do in different degrees in different systems. Number four, all political systems are mixed in the cultural sense, containing elements of both modern and primitive culture and subcultures, do in varying degrees. All political systems can be compared in them of the relationship between function and structures. Now, Almond's conceptualization of the political system. ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ମତରେ ବା ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଅଛି? On the basis of the characteristics, we can make out the comprehensive list of these characteristics. First, a set of elements or object comprising a whole. 2 number, interactions and a regular pattern of interactions. Number 3, interdependence. 4, comprehensiveness. 5, existence of boundaries. 6, structures. 7, functions performed by the structures. ଆଲମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକରଣ ଓ ନିଯୁକ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ ଏଣ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନିରୂପଣ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିକୁଲେସନ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସମଷ୍ଟିକରଣ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରେଗେସନ, ରାଜନୈତିକ ଯୋଗାଯୋଗ, ପଲିଟିକାଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଆଉଟପୁଟ ଫଙ୍କସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରୋଲ ମେକିଂ, ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ, ରୁଲ ଆପ୍ଲିକେସନ, ନିୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟାଦେଶ, ରୁଲ ଆଡଜୁଡିକେସନ। ଆଲମଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ କୌଣସି ସମାଜର ସମକାଳୀନ ଓ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯାହାକି ବୌଦ୍ଧ ସାମାଜିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଲମଣ୍ଡଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତଃକ୍ରିୟା ସମୂହର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ସେହି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଓ ଏହା ସମାଜର ଉଣା ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଇନଗତ ରକ୍ଷଣ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୟାସ କରେ କିମ୍ବା ଭୟ ଦେଖାଇ ଏକୀକରଣ ସହ ଅନୁକୂଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ସେ ବି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ସଂରଚନା ମାନ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ସଂଗଠନାତ୍ମକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ପ୍ରତିରୂପରେ ଉପକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିହେବ ନାହିଁ। ଏହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ କରି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ
महत्वपूर्ण अवधारणात्मक उपकरण उपलब्ध कराइए। तेणु संगठनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण यही विषय को समृद्ध करिछि। यह राजनैतिक वास्तवतार केतेक सत्य उद्घाटन करिछि, कारण यही प्रतिरूपक खूब स्वीकृति मिली और यार प्रयोग वर्णनात्मक व्यवस्थित ढांचा रूपे स्वीकृत हो पारिछि। Now I am going to the criticism of the Gabriel Almond's structural functional approach। तांकर मतामत को कौन सब समालोचना करा जायछि। 10 पॉइंट मु कहूची। फर्स्ट वन, fails to define an dependent society। Almond defines political system as a set of interaction to be Point 1, fails to define an dependent society। Almond defines political system as a set of interactions to be found in all interdependent societies। He, however, now here explains which society is or can be treated as an interdependent society। Number 2, gives no place to subsystem। It ignores the study of a parapolitical system which are at work in each society at large। Number 3, wrong to define political communication only as a input function। Wrong to define political communication only as an input function। Almond aberrately classifies political communication as input function। Political communication is at work at all the three levels: input, conversation, and output। Input, conversation, and output। Number 4, no mention of a feedback process। No mention of a feedback process। Almond's model of a political system ignores the importance of a feedback functions। He assumes feedback as a part of the communication process। 5, first model was static। First model was static। Almond's first model is a static model which status quo commitment। The concept of equilibrium is inadequate। Number 6, can be used only for studying developed political system। Almond's approach can be applied more to be developed political system of the West and less to the developing political systems of Asia and Africa। Number 7, definition of a political development not objective। Almond's concept of a political development is biased because he has used variable and a concept drawn from the theory of Western liberal democratic political systems for conceptualizing political developing. It is writ large in conceptualize it as structural differentiations। Number 8, gives no places to the study of crisis and revelation। Gives no places to the study of crisis and revelation। It fails to take into account such issues as political decay, crisis, and revolutions, change in wrongly conceptualized as the development। Point number 9, cannot be used for the studying non-democratic political system। Cannot be used for studying non-democratic political system। Holt and Turner opine that Almond's approach cannot be used
for the studying totalitarian and authoritarian political system, because in such system the seven functions of the political system cannot be identified and analyzed. The last point can lead to contradictory result. Can lead to contradictory result. When Holt and Timur opposed that approaches for comparative politics studies, they found that it produced opposing results. When they compared the Soviet political system, Soviet means Russia, USSR, Soviet political system with the Indian political system, they found the latter to be the developed system by when they compared it with the US political system. They found the Indian political system to be at best traditional political system. Thus, the structural functional approach is in general and the one used by the Almond and his associates in particular has been severely criticized by the critics. Gabriel Almond जो structural functional approach विषय मतामत देले यहाकू समालोचक माने समालोचना करछन्ती शेष पॉइंट रे कुहा गला से जो तांकर मतामत या अमेरिका पई प्रयुज्य सोवियत रूसिया बा भारत पई यह प्रयुज्य हेई परिबो नाही बोली सेमा तांकर एथिरे मतामत देइछन्ती. Okay, now the approaches chapter will completed. The approaches chapter will completed. The new point is public policy. The new point is public policy. This is the last point in unit 2, public policy. Okay. अच्छा, public या private. पब्लिक आ प्राइवेट दीटा कथा बुझी जामे गोटे हला पब्लिक आ गोटे हला प्राइवेट. पब्लिक कहले कौन बुझीचे आ प्राइवेट कहले कौन बुझीचे. पब्लिक कहले सरकारी संस्था द्वारा परिचालित हेउतिबा कार्य पॉलिसी गुडी को पब्लिक पॉलिसी हम कहि थाए. हम सीधा सळ कहि परिबा सरकार पॉलिसी को पब्लिक पॉलिसी बोली कुआ जाय थाए. प्राइवेट पॉलिसी कोन ना बेसरकारी इंस्टीट्यूशन बा बेसरकारी संस्था गुडी को द्वारा परिचालित हेउतिबा कार्य को प्राइवेट पॉलिसी कुआ जाय. तनो सबु पॉलिसी रो नीति नियम रहिछि किंतु पब्लिक पॉलिसी जहाँ राष्ट्र पई प्रयुज्य प्राइवेट पॉलिसी जहाँ जे कोनसी व्यक्तिगत संस्था बा कोनसी कंपनी बा इंडस्ट्री पई प्रयुज्य ताहा पब्लिक पई प्रयुज्य नुहे. Now the new topic is public policy, some perspectives. Okay. Public policy as an academic pursuit emerged in the early 1950 and since then it can be acquiring new dimensions and is now attempting to acquire the status of a discipline. As a study of a product of a government, policy forms a significant component in several social sciences disciplines like political science, public administrations, economics, and management. Public policy is a frequently used term in our daily life and academic literatures, where we often make references to national health policy, education policy, wage policy, agricultural policy, foreign policy, and so on, etc., etc. The concept of a public policy presupposes that there is a domain of life that is not private or purely individual, but common. Private है individual, public है common. In the past
studies of public policy we broadly concerned on the institutional structure of philosophical justification of the government. अच्छा पॉलिटिकल साइंस रो विभिन्न जो पार्ट गुड़ाक अच्छी आम जो राजनीति विज्ञान अध्ययन करुचे तार विभिन्न पार्ट गुड़ाक अच्छी है कि जमी प्रथम जे इकोनॉमी पॉलिटी गोटे विषय वस्तु थिला इकोनॉमी पॉलिटी मींस इकोनॉमिक्स आ पॉलिटिकल साइंस मिलित भाव में गोटे सब्जेक्ट अध्ययन कराउतला पास्ट रे ता ना थिला इकोनॉमी पॉलिटी से बेला पॉलिटिकल साइंस रो आउ कौन सो ऑर्गन अछि के कहि परिबो हाउ मेनी ऑर्गन्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस के कहि परिबो पॉलिटिकल साइंस रु पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटे नुआ पार्ट हो जाइए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन ये सब पॉलिटिकल साइंस रु सेपरेट है कि गोटे नुआ पार्ट हो जाइए ओके व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी Public policy is a formal documented statement of interactions and set of actions of a government to either remove certain differences or improve the conditions in any particular area of concerns. Thomas Dye defines it as whatever government choose to do or not to do. While according to the Anderson, it is a possessive, it is a purposive course of action or interaction undertaken by the actor or set of actors dealing with the problems or matter concerns. सरकारी नीति को लोकनीति कहा जाए सरकारी नीति को लोकनीति कहा जाए सर्वसाधारण निकटरे नित्य प्रचलित एवं लोकामुखर तथा सरकारी स्तर रे थिबा समस्त व्यक्तिंकर जपामाळी हेउची लोकनीति सरकार नीति बा राष्ट्रनीति आमे साधारणतः जातीय शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति बीमा नीति कृषि नीति वैदेशिक नीति ये सब को आमे पब्लिक पॉलिसी बा लोकनीति बोली आमे ग्रहण करि परिबा यह गोटे लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण पाई यह को प्रस्तुत करा जायछि यही नीति राजनीतिक व्यवस्था रु सृष्टि आउटपुट एवं समाज को आसुथिबा इनपुट को आधार कर स्थिर करा जाई थाए यही साधारण नीति कौनसी गोटे उपादान उपरे प्रतिष्ठित न हुई एक आंतनिर्भरशीलतार वातावरण मध्य सृष्टि हुई थाए या अर्थनैतिक विश्लेषण व्यतीत मानविक मूल्यबोध विचारशीलता तथा वास्तवता प्रति अधिक ध्यान देता है I am give some quotes or definitions of the philosophers. According to the Wider, policies are general directives. Policies are general directives on the main line of actions to be followed. वाइड्रोम को मतरे लोकनीति हेउची साधारण निर्देशावली जहा को अनुसरण करी निष्पत्ति निया जाई थाए अकॉर्डिंग टू पीटर सेल्फ policies are changing directive as to how text should be interpreted and performed. पीटर सेल्फ को मतरे लोकनीति हेउची परिवर्तित निर्देशात्मक जहा को आधार करी गुरुत्वपूर्ण कार्य गुड़िक वास्तव व्याख्या और समाधान सूत्र स्थिर करी थाए पिला माने जो पब्लिक पॉलिसी डेफिनेशन लिखिबो नोट बाहर करो मु तीनटा के चारटा डेफिनेशन कहूची लिखिनियो
What is public policy or definition of a public policy? Please note down. Please note down the definition of a public policy. First one, Thomas Dye. Thomas Dye defines, comma, whatever government choose to do or not to do, to do or not to do. Okay, ଲେଖୁଛଟି? ଆଜ୍ଞା। Okay, number two, according to Anderson, according to Anderson, Anderson, according to Anderson, purposive course of action, purposive course of action or inaction undertaken by an actor or a set of actors in dealing with a problem or matter of concern, concern. Number three, according to Peter Self, policies are changing directives as to how tasks should be interpreted and performed. Number four, Sir Geoffrey Vickers, Geoffrey, Geoffrey, Sir Geoffrey Vickers, comma, policies are decisions giving decision coherent and continuity to the courses of action for which the decision making body is responsible. Okay. Now next lesson, nature of the public policy. A policy may be general or specific, broad or narrow, simple or complex, public or private, written or unwritten, explicit or implicit, dictionary or detailed, qualitative or quantitative. Here the emphasis is on public policy. That is, what a government choose a guidance for action from the viewpoint of a public policy. The activities of a government can be put into three categories. The activities of a government can be put into three categories. First, activities that are
attached to the specific policies. Second, activities that are general in nature. Third, activities that are based on vague and ambiguous policies. However, in practice, a government rarely has a set of guiding principles for all its activities. A public policy may cover a major portion of its activities, which are, which are consistent with the development policy of the country, socio-economic development, equality or liberty, or self-reliance, or similar broad principles of guidance for action may be adopted as a developmental policy or basic framework of goals. A public policy may be narrow, covering a specific activity such as prevention of child labor, or it may be broad as women's empowerment. A public policy may be applied to a limited sections of people of a country or to its entire people. Thus, the following points that are ଗୋଟିଏ ନୀତି ସାଧାରଣ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାପକ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ସରଳ ଓ ଜଟିଳ, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ, ଲିଖିତ ଓ ଅଲିଖିତ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଲୋକନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଲୋକନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତିର, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ରହିତ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୱଚିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆଇନ, ନିୟମ, ଯୋଜନା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଲୋକନୀତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଟିକଲର ନୂଆ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନୀତି ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ପ୍ରବାହ ଧାରା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ କିଛି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ସମାନତା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଦି ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାତୀୟ ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଲୋକନୀତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ଯେପରି ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଏପରିକି ହୋଇପାରେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାସନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉ ବା ପୃଥକ ପୃଥକ ଲୋକନୀତି ରହିଥାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମେଗା ପଲିସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी केते प्रकार? टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। प्लीज राइट डाउन टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। फर्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी। थर्ड,
regulatory policy. 4 constituent policy. 5 conflict policy. 6 bargaining policy. ओके तेणु पब्लिक पॉलिसी आ लोकनीति आउ घर नीति भितर आम लोकनीति को सरकार नीति भाव ग्रहण कर सरकारी संस्था भाव यह ग्रहण कर सरकारी संस्था मान ये नीति को ग्रहण कर सरकार कल उपर प्रयोग कर सरकारी कल द्वारा यह कार्यकारी होता है ओके तेणु आम गोटे धारे कहीपर लोकनीति को सरकार नीति बा राष्ट्रनीति रूपे कह जाए थैंक यू ऑल ऑफ यू Thank you all of you. Today's class is over. The class is over. Thank you, sir. Thank you everybody. Thank you, sir. Hello, sir. Hello. Yes. Sir, किसी select Yes. question दिखाते. हाँ आजिर क्वेश्चन होची व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी आजिर क्वेश्चन होची व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी analyze the political policy analyze the political policy okay the class as of last class में possible question दे देबी thank you everyone bye Hello? Hello?